के रिश्ते की बात करते हैं, बहुत नजदीकी रिश्ता होता है और आप तो खास एक अलग रिश्ता शेयर करती हैं सोहा के साथ. किस तरह की प्लानिंग है शादी को लेकर और डू यू गेट इमोशनल व्हाइल थिंकिंग कि सोहा इज गेटिंग मैरिड? I'm very happy. I'm very, very happy and we are celebrating. और उस दिन पता नहीं क्या होगा. उस वक्त तो थोड़ा बहुत इमोशनल I feel. कुछ तो होना चाहिए, otherwise I don't know. हाँ, कुछ तो होगा उधर. We will miss Tiger. मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ? आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपने सोहा की परवरिश और उनकी पढ़ाई की है कि वो एक अच्छी वाइफ बन सकेंगी? पढ़ाई का क्या when she went to college, she took recipe how to make dal and सब कुछ. काफी रेसिपी बुक है उनके पास, मगर अभी तक तो she hasn't been to the kitchen. हाँ. Good in theory. So she says her talent and skill is for other things, not for cooking. So बाद में देखेंगे. But even I couldn't cook till I was 35. So there is गुंजाइश, मतलब hope है. Okay, Soha, hi. You're on your right. For a girl, it's very important to be dressed, as a bride. So, can we know about how is your planning going on as a bride? What about your costumes, about your jewelry? Because it's not a costume. Don't call it a costume. Okay, sorry. It's not a film. Your lehenga. It's this is happening in a few days. And I'm very grateful that I have my mother and my sister and my friends, and that everybody has an opinion on what I should wear and whether I should be understated or what color I should wear. I'm thoroughly confused, but I have some beautiful options, and we have finally decided on a look for the wedding. जैसे आप सबको पता है, it's a very small and simple wedding, घर पे ही है. But I think it should be memorable and it should be special, and I will be dressed for the occasion. Kareena, during her marriage, had worn Sharmila ma'am's dress, so like her marriage time outfit. So, aren't you did you ever think कि आपको शायद वो पहनना था और उन्होंने आपकी भाभी ने पहन लिया या ऐसा कुछ? नहीं, I think that was the tradition. This was an heirloom gharara. And it was actually Badi Amma's, my grandmother's, my father's mother's. And it was passed down to her daughter-in-law, my mother, and then passed down to my mother's daughter-in-law, Kareena. Hi, Soha, to your right. May I interject, please? सवाल अगर हम अब एजुकेशन और आज के इनिशिएटिव के बारे में पूछे, थोड़े मायने वाले सवाल जो कि इस ओकेजन पे सेंसिटिव हैं, तो वो बेहतर रहेगा, प्लीज. थैंक यू. एंड आई एम श्योर सोहा ये सब सवाल आपके साथ वन ऑन वंस में आंसर कर चुकी हैं. So Soha, since the inception of your career, you have been doing a lot of movies. Meaningful movies which have been entertaining to the audience, which belong to a lot of big directors, producers and all that. And in shaping your career, there has been an effect of your stellar family presence, especially your mother, whom you call Amma with love. So how influential she has been in shaping your career, and since you are now going to start your new inning of your life. So जैसे क्लिनिक प्लस का भी फिलॉसफी है कि जो माँ बेटी का रिश्ता है, जो बंधन है, बहुत ही गहरा है, मजबूत है. पिछले साल भी हम क्लिनिक प्लस की वजह से आए थे, साथ साथ एक माँ से माँ से मजबूती इनिशिएटिव लॉन्च करने के लिए. तो ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एंड अम्मा हैज बीन अ सक्सेसफुल एक्टर as well as a successful homemaker, a successful wife, a successful mother, I think. So it's a source of inspiration for me. Women are known to have to multitask, and my responsibilities have increased now. So I draw inspiration from her. मैं जानता हूँ मेरा सवाल यहाँ पर बिल्कुल पसंद नहीं किया जाएगा, और मेरे ख्याल से शर्मिला जी भी पसंद नहीं करी, लेकिन बहुत जरूरी है. सब लोग जानना चाहते हैं बिकॉज ऑफ सेंसर बोर्ड की आप चेयरपर्सन रह चुकी हैं. तो एक जो भी कमेंट आपका हो इस पूरे मामले में, तमाम लोगों ने इस्तीफा दिया. नहीं, एक मेरा प्रिंसिपल है, क्योंकि मैं सेंसर बोर्ड से कनेक्टेड थी. आई वॉज अ पास्ट चेयरपर्सन ऑफ सेंसर बोर्ड, सो आई डू नॉट लाइक टू कॉमेंट. और अभी
जो भी हो रहा है उसके ऊपर मैं बिल्कुल नहीं कमेंट करूंगी, क्योंकि मैं CBFC से जुड़ी हुई थी। तो मुझे नहीं लगता है जे वो ठीक रहेगा। मैं अभी आज जो भी हो रहा है, मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स आई विल कमेंट, अभी तो मैं बिल्कुल नहीं कमेंट करूंगी। But Sharmila ji, Soha ji, do you agree with my point when we say that our country is gender biased when education is concerned? हाँ बिल्कुल, of course. I mean it's a fact that there is a son preference in our country. मगर I'm an optimist और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये धीरे धीरे चेंज होगा, क्योंकि जब पेरेंट्स को लगेगा कि लड़की भी कमा सकती है, लड़की भी पेरेंट्स की देखभाल कर सकती है, तो शायद उनका भी वो बदल जाए। क्योंकि मैरिज इज द ओनली पासपोर्ट टू लाइफ, तो वो बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कहती हूँ कि शादी ज़रूरी नहीं है, मगर आई थिंक एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे सबको ये समझ आ जाएगी। So your perception on this? आई थिंक जैसे अम्मा ने कहा, देयर इज ऑफ कोर्स प्रेफरेंस। मैं जब अपनी पर्सपेक्टिव से देखती हूँ, मैंने कहा दैट देयर वाज नो डिफरेंस बिटवीन माय ब्रदर्स एजुकेशन एंड माइन, बट आई अंडरस्टैंड दैट्स नॉट द केस फॉर अदर पीपल। इफ यू इन्वेस्ट इन समवन्स फ्यूचर, whether they're a man or a woman, a girl or a boy, they will be able to contribute, they will lead a fuller life. And I suspect it's also because of certain social, cultural practices that have now been deemed illegal. Therefore, it becomes, or it's perceived to be more burdensome to have daughters. But that is a perception and a reality that is changing. And I'm very happy to see the families here who are supporting their daughters, the 150 or the 200 young girls who've been selected and given scholarships on behalf of Clinic Plus. You can see that their families are very excited about their education. But sure, this is about 200 girls. But what about the regional state, the Orthodox family, who have not yet been that? Yes, but we have to take a step in the right direction. So it's a very, very important and valuable step in completely the right direction. And as Amma said, I'm also an optimist. Things are changing. It takes a lot to change a mindset. There's no shortcut, but we'll get there. कतरा कतरा करके ही समुंदर बनता है। Last two questions. Last two, please. सारा देश, वाओ। हमारी शादी जो है वो घर पे ही होगी, जहाँ पे कुणाल और मैं दोनों रहते हैं। एक छोटी सी शादी है, हमारी इमीडिएट फैमिली और ही होंगी उस वक्त। लेकिन ऑफ कोर्स आप सब इनवाइटेड हैं। और not to lunch, but is it a road I don't know how carpet? it works. It's a Is yeah, it a two ro- samosas. If you come, we'll give you some. We'll be very nice to you. We'll give you samosas. That's it. Yes. Next question. और आखिरी सवाल। गुड इवनिंग शर्मिला जी। आप संजीदगी में अच्छे नहीं लगते, थोड़ा जब स्माइल करते हैं दैट मेक्स यू बेटर। That's not a question. नो नो, सो आई एम जस्ट कमिंग अप टू द सो लाइक इनको कैसे प्लीज कर सकते हैं? बट आई कैन कुक का येलो दाल। You already asked this question in your one-on-one. Yeah, अभी आप सबके just सामने I'm पूछ रहे हैं। asking like how can you please शर्मिला जी? How can I please Sharmila? I don't have to try. She's always pleased with me. Sharmila ji, is it important for a girl to give birth to a baby? मतलब, do you think like motherhood is important for a woman? It's not compulsory. I mean, जरूरी नहीं है कि you have to become a mother. मगर हर phase of life जो है उसको enjoy करना चाहिए. And motherhood is also a phase of life. मगर अगर कोई औरत जो जिनको बच्चे नहीं चाहिए वो भी ठीक है. You don't have to become a mother. Would you like your daughter and daughter-in-law? अच्छा, now we are not going to have this long that was chat. the last question. However, we have Janta Bites happening on special request. Please request you to take another 5 minutes. Yeah. You can get all your mics over here and we can do Janta Bites. We can